जितनी भी मूवमेंट्स स्टार्ट हुई हैं उनको स्टार्ट में ऐसा ही रोकने की कोशिश की गई है कंट्रोवर्सी क्रिएट करके, लेकिन फाइनली तारीख गवाह है इस चीज़ की कि ऐसी तहरीकों की जीत होती है जिनमें यूथ साथ हो और जो राइट पे हों, जो हक पे हों। और हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह राइट पे हैं, हक पे हैं। हम लोग कोई प्रिविलेजेस डिमांड नहीं कर रहे, हम लोग बेसिक राइट्स डिमांड कर रहे हैं, फंडामेंटल राइट्स डिमांड कर रहे हैं, और वो अपने जायज़ आइनी हकूक़ हासिल करने की जिद्दोजहद करना कोई जुर्म नहीं है, बल्कि ये हमारा आइनी हक है। ऐसे र्यूमर्स और ऐसे प्रोपेगेंडा जो हमारी कम्युनिटी के अगेंस्ट जो हैं फैलाने की कोशिश की गई, उससे बग़ैर ये सोचे समझे कि बहुत सारी इंसानी जानों का ज़िया हो सकता है, नुकसान हो सकता है, बहुत ज़्यादा इनसिक्योरिटी देखने में आई, बहुत सारे लाइफ थ्रेट्स हमें आए, और उसकी वजह से हमारे बहुत सारे एक्टिविस्ट और बहुत सारे लीडर्स जो लीड कर रहे थे कम्युनिटी को, उनको बहुत सारे चैलेंजेस को फेस करना पड़ा। और लेकिन ये है कि हम लोग एक मुहूर्त को ख़त्म करेंगे तो बहुत सारी मुहूर्तें मैदान में निकल आएंगी। वो बात है कि ये तहरीक रुकेगी नहीं, ये इंशाल्लाह चलती रहेगी। पार्लियामेंटेरियंस वर नॉट वेरी अवेयर ऑफ द इशूज़। हमें याद है कि हम जब भी वहाँ मीटिंग्स के लिए भी जाते थे तो अक्सर हमें पुलिस वाले ना रोक देते थे, कहते थे मतलब स्पेशली वो सेंसिटिव बिल्डिंग्स के सुप्रीम कोर्ट वगैरह के आस पास जाने की फेडरल अमर्सन में मीटिंग्स होती थी, तो कहते थे आप किधर जा रहे हैं, मांगने आए हैं यहाँ पे। हम कहते थे कि हम हमारी मीटिंग है अभी, हम यहाँ पे वो कानून हमारा बन रहा है। कहते साढ़े भी कानून बनेगा। सुबह मुझे ना मेरे एक दोस्त ने कहा कि ये तो इस तरह की होते हैं जी, ये खुद ब खुद कर लेते हैं जानबूझ के। मैंने फिर उसको आगे से काउंटर क्वेश्चन किया, मैंने कहा यार आप औरत बनना चाहोगे? तो कहता मैं तो नहीं बनना चाहूँगा। तो मैंने कहा फिर सेम उन्हीं का भी यही सोचे ना आप। The strong suggestion is made that Pakistan as an Islamic republic should adopt secular India's model of doing gender identity and establish medical boards that will control the gender identity of individuals here instead of allowing self-declared gender identity. I think that Pakistan really took a bold step in 2018. It took a bold step before then when the Supreme Court jurisprudence was going on from 2009 to 2012. But, you know, I know that a lot of the debate has been around self-identification, gender self-identification, and so forth. That was part of the boldness of the Pakistani approach. But there's been other bold aspects like reservations of certain percentage of jobs and education and so forth for Khwajasir or trans folks. That's certainly nothing that you would ever see in the United States. And under current conservative interpretations that are powerful in the United States, that kind of quota scheme for African Americans, for women, for transgender folks, any minority would be unconstitutional. It would violate equality, it would violate dignity to see people just through the lens of race or sex or sexuality. So, I mean, I think Pakistan has taken a lot of bold steps. Obviously, there's going to be pushback against that. But, you know, what we're seeing now is, I think, just the inevitable push and pull of politics. I think that the debate right now is a bit simplistic. So there's just allegations being made. You know, this is anti-Pakistan or anti-Islam. Maybe it is, maybe it isn't, but where is the evidence? And so as a lawyer, you're always looking for evidence. What is the evidence and what's the arguments? Don't just make accusations, insinuate things, call people names, this sort of stuff. What are the
arguments and what are the evidence? And one of the things that has surprised me about the Federal Sharia Court taking this case is that they have decided to spend their valuable time, and it is valuable time, on petitions where there's just a lot of name calling going on. And the Federal Sharia Court's mandate is to decide whether or not laws are repugnant to the injunctions of Islam. It's not to hear political muckraking. I don't see that. I don't think that they would see that as their role. But for some reason, they have opened their court and hours and hours and hours of their time to adjudicating a lot of name calling that has happened in these petitions which initiated the challenge to the 2018 Act. अर्जेंटीना मेरा ख्याल है वो पहला मुल्क था जिसमें ट्रांसजेंडर पर्सन्स खास तौर पे लीगल जेंडर रिकग्निशन उस पर कानून साजी हुई. माल्टा, बरतानिया, अमेरिका तो बहुत पीछे हैं, बाकी दुनिया बहुत आगे जा रही है और उसमें पाकिस्तान भी है. पाकिस्तान की मिसालें दी जाती हैं अक़वाम मुत्तहिदा में, भारत में, अमेरिका में, बरतानिया में कि पाकिस्तान ने कितना प्रोग्रेसिव इंसानी हकूक से कंसिस्टेंट कानून पास किया है. ट्रांसजेंडर पर्सन्स प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स एक्ट, इसमें शादी का कहीं जिक्र नहीं है, इसमें सेम सेक्स रिलेशंस का कहीं जिक्र नहीं है. बहुत से और हकूक जो आपको मिलते हैं वो आपके आईडी कार्ड से जुड़े हैं. ठीक है. Transgender persons, around the definition of intersex, and the idea or the concept of self-perceived identity. They were somehow to a certain degree resolved, but now they have cropped up once again.